Assalamu alaikum viewers, hope you are all doing well. I'm here with the chemistry video. So today's topic of discussion is chemical equilibrium. It is the main topic, and here are the following headings which we are going to discuss today. Okay, so first of all, to study any topic or to get complete information, we must know about what are we studying and what is the background of our study. So we should start with introduction, then we'll come to definition of the certain topic, few examples to make it more clear, and then the further types of the topic. Okay, so our today's topic is chemical equilibrium. We will discuss its introduction, its definition, few examples, and then reversible and irreversible kind of reactions. Okay, so when we say equilibrium, something comes into our mind in which both two or more than two things are equal. So in equilibrium or chemical equilibrium, when the concentration of reactants is equal to that of products. Okay, now we should know what is a chemical reaction, what is the concentration of reactants, what is the concentration of products. Okay, so whenever we start a chemical reaction or whenever a reaction proceeds, either it is physical or chemical reaction, there are two kinds of things which are reactants and products. Reactants are the things or the substances which combine together to form the products, and products are the compounds which are formed from the reactants. Okay, and their concentration means how much amount. Okay, for example, we are taking 1 liter of water. So 1 liter is the concentration or the amount of water that we are taking. So we have defined when concentration of reactants is equal to that of products is called as chemical equilibrium. So to discuss this phenomena, we will discuss the example of respiration. Okay, respiration is the process in which we and the plants take oxygen and carbon dioxide respectively. For example, humans always take oxygen into their lungs and release carbon dioxide out of their lungs, whereas during daytime plants inhale, which means they take in carbon dioxide and give out oxygen. But at night the phenomena is reversed. Plants also take oxygen into themselves and release carbon dioxide out of themselves. Okay, so at daytime humans and plants are performing an equilibrium reaction. How is it in equilibrium? The amount of carbon dioxide released by the plants, the amount of carbon dioxide released by the humans will always be equal to the amount of carbon dioxide released by the plants, and the plants will take the carbon dioxide released by humans, and the humans will take the oxygen released by carbon dioxide. Okay, this is in equilibrium phenomena. But at night the phenomena is reversed. Plants also start taking oxygen into themselves. Okay, so when we go under plants, we feel suffocation, we faint, sometimes we faint because there is deficiency of oxygen. The phenomena of equilibrium is disturbed, and that is the reason that we feel suffocation. Okay, so here is another example. For example, carbon and oxygen are combining and they form carbon dioxide. Here I have written two kinds of arrows, one which is representing the forward reaction and one which is representing the backward reaction. Okay, so the combination of carbon and oxygen forms carbon dioxide. It is the forward reaction. Okay, but when carbon dioxide breaks down into carbon and oxygen, it is the backward reaction, and it is the reverse of the first reaction. Okay, so here this compound is in equilibrium. For example, we have taken 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of oxygen, and they are forming 1 mole of carbon dioxide. When carbon dioxide breaks, 1 mole of carbon dioxide breaks, it forms 2 moles of oxygen and 1 mole of carbon dioxide. This is the phenomena which represents the true meanings of equilibrium. Okay,
Now, for the further study or for the further reactions or for the further understanding, we must know about certain terms, which are reaction. I have told you about the reaction, that it consists of two parts, which are reactants and products, and reactants react to form products, and products are formed from the reactants, and sometimes products also break down into reactants. Okay, so there are two kinds of phenomena now: reversible and irreversible reactions. Okay, so the reactions which proceed in both forward and reverse direction are known as reversible reactions. For example, I have given the example of boiling of water. So this is the most basic and common example. We boil the water, okay, or for example, the water is boiling and we turn the stove off. Now what happens? The water will return to its original temperature after some time. But there are certain reactions in which there is no phenomena of returning to their original position. Okay, so the reactions which proceed in both forward and reverse reactants or direction is known as reversible reaction. Okay, it is known as reversible reaction. For example, I have given you the example of carbon and oxygen in the previous in the last few minutes, and it is the example of reversible reaction. And then the reaction comes, and the other type of reaction is irreversible reaction. So as the name shows, irreversible, it means that they will proceed only in one direction, which is the forward direction. For example, burning of a candle, it is a reaction in which the candle would never return to its original position. Once it's burnt, it will never be the same again. Okay, hope you will understand the phenomena. Hope you got the complete information, the complete understanding about the topic. And here is the end of our today's topic. If we will discuss further reaction constants, etc. type of things, and we'll get more understanding about it, inshallah. So now we should have an overview of the topic. तो हमारा आज का टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखी, और दो टाइप ऑफ रिएक्शंस देखे, विच आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो जब हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की, तो हमने ये कहा कि जब भी हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है. ओके, अब हमें ये बताओ, अब हम डायरेक्ट हमें कोई कह दे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें नहीं समझ आएगा कैसे. इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. कोई भी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज जब हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक होते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स. ठीक है, रिएक्टेंट्स वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं. और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो रिएक्टेंट्स के मिलने की वजह से बन रहे होते हैं. ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यही प्रोडक्ट्स दोबारा टूट के अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए एग्जांपल दी थी रिस्पिरेशन की, जिसमें ये है कि रिस्पिरेशन के सांस लेने का अमल. ठीक है, जिसमें अब हम इंसान क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और वो अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं, और जो फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाल देते हैं. और जो दिन के टाइम जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन जो होती है उसको बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं. अब ये तो फिनोमेना इक्विलिब्रियम का हो गया कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस अपने अंदर से निकालेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर ले जाएंगे. लेकिन रात टाइम ये फिनोमेना उल्टा हो जाता है. कैसे उल्टा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हवा में, और जब हम पौधों के करीब जाते हैं तो हमारा दम घुटता है, सांस रुकता है, और कभी कभी हम बेहोश हो जाते हैं. और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी जिन आ गए. नहीं, जिन नहीं होते, वो सिर्फ इसलिए हो रहा होता है कि जो पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो इंसान होते हैं वो भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है.
उसके बाद मैंने फिर एक और एग्जांपल दी थी कार्बन और ऑक्सीजन की, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ने मिल के बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अब मैंने यहाँ पे दो एरोज लगाए हैं, एक एरो फॉरवर्ड जा रहा है और एक बैकवर्ड जा रहा है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट कर रहा है। कैसे कि अब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड था और दो ऑक्सीजन थे, इन्होंने मिला सॉरी एक कार्बन था और दो ऑक्सीजन थे, इन्होंने मिलके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये क्या करेगा कि ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एक इसमें से कार्बन निकलेगा और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमें ये लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन कभी भी रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि जितने प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बनेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे, उतने ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर हमने एग्जांपल देखी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिल के बना, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटा तो वो कार्बन और ऑक्सीजन में दोबारा कन्वर्ट हो गया। इसमें मैंने बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको बताई है, वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर का मतलब ये है कि पानी को हम लोगों ने हीट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि चूल्हा बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे वापस आ जाता है, उस टेम्परेचर पे आ जाता है जिससे हमने उसको गर्म करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हुई रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि गर्म भी हो गया लेकिन दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, दोबारा से ठंडा भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। फिर आते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इरिवर्सिबल हमें नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा फिनोमेना होगा जिसके अंदर एक चीज़ हो रही होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है या जो हमारे पास काम हो रहा होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि मोमबत्ती है उसको हमने जला दिया, जब मोमबत्ती पूरी जल गई है अब क्या होगा कि बस वो ख़त्म रिएक्शन, उसके बाद वो मोमबत्ती कभी भी अपनी असल हालत में वापस नहीं जा सकती, वो वैसी की वैसी दोबारा नहीं हो सकती जैसा हमने उसको जलाया था। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगले वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इससे फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे इसके क्या इसके काम होते हैं, हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।